Hello students, hope you all doing well. So here I'm Gargi Pamar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management Gurgaon. So here I'm back with an online lecture series on income tax subject. So let's start with lecture. So see, in today's lecture we are going to discuss income from other sources. This is the fifth head of the income, that is income from other sources. We have already discussed four head of income. First is income from salary, second is income from house property, then income from business and profession, and fourth is income from capital. And today we are going to start last head of the income, that is income from other sources. So first question arises that which income will be taxable under this head? Okay, so let's see. Let me show you the slide. Just wait for a minute. Yes. See. This is the income from other. So which income will be taxable under the head and other sources? So the income which is not be taxed under any head which we have discussed earlier. So income which cannot be taxed under any other head, and income which is not exempt at all, that will be taxable under this head. Okay? So which income will be taxable under the head other sources? So income which is not taxable under any of other head, and income which is not taxable at all, that income will be taxable under this head. So under the head other sources, all the income which is not taxable under any other head, under any four head, and which is not exempt from tax will be taxable under this head. Okay. Now, which type of income will be taxable under this head? So see, following incomes will always be taxed under this head. So dividend income will always be taxable under this head. Dividend income will always be taxable under income from other sources. Winning from lotteries, crosswords, puzzles, race cars, games, gambling, or betting. So if you win some prize or some amount from lotteries, crossword puzzles, races, cars, card games, gambling, or betting, through all these activities, if you gain something, then if you gain some money or you gain some income, then that income will be taxable under this. Okay. If you receive any interest on securities, any compensation you receive, or any enhanced compensation if you receive, then these compensation will be taxable under this head. It will be taxable under income from other sources. Okay. Then income from letting of machinery, plant, or furniture. If you are letting any machinery or plant or furniture, if you are giving any machinery or plant on rent and receive some rental income from that letting of machinery or plant, then in that case, that rental income of that machinery, plant, or furniture will also be included in the income of other sources. So that income will be taxable under the head other sources. Okay. Next, sum received under scheme and insurance policy. If you received any income, any sums under scheme and insurance policy, if you have scheme and insurance policy in your in the organization which you are working, and you receive some amount from scheme and insurance policy, including bonus, then that amount will be taxable under this head. That amount will be taxable under other sources. Okay. Yes. The next, gift received by individual or any HUF. If any individual or any HUF received any kind of gift, it may be in cash, it may be in non-monetary term also. That gift received will be taxable under this head. That gift will be taxable under the head other sources. Okay. The next, where a firm or company purchase shares to its closely held company without consideration or FMV, of which exceed rupees 50,000 will be taxable under this head. So, if any firm or any company purchase any shares to its closely held company, like if any holding company purchase the shares in subsidiary company, okay. So, or any reporting party receive
some income from related party or purchase some shares from related party. Okay, तो बेसिकली ऐसी फॉर्म जिसको कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी से शेयर्स परचेज करे, या उससे रिलेटेड कोई कंपनी है, मेन कंपनी जो है उससे रिलेटेड कोई कंपनी है, उससे अगर शेयर्स परचेज करे तो उस शेयर से होने वाले इनकम भी कहाँ टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड income from other sources. So where a firm or a company purchase shares to its closely held company without consideration, the purchase of share must be in the form of without consideration. So these shares must be purchased without consideration. Okay, or if the FMV of these shares exceed rupees 50,000, so fair market value of these shares exceed rupees 50,000, then this income or this income from these shares will also be taxable under this head. So where a company or a firm purchase shares to its closely held company without consideration, or fair market value of these shares exceeds rupees 50,000, then in that case such income from such shares will be taxable under this head, under the head income from other sources. Okay, yes. Then next, income from subletting of house property by a tenant. So see, if you are subletting your house property, we have discussed letting out of house property in the second head of the income, that is income from house property. तो जब हम किसी house property को rent पे देते हैं, let out करते हैं, let out means rent पे देना. So if we let out any house property, then the income of that house property will be taxable under the head house property. But if we are subletting, if we are doing subletting of a house property and receive some income from that subletting, then in that case this subletting income will be taxable under this. So what do you mean by subletting? See, have an example of subletting. See, मैंने अपना फ्लैट आपको या किसी, सपोज जैसे मैंने अपना शेयर एक्स लिमिटेड को, या एक्स एक पर्सन है, मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिसको मैंने अपना एक फ्लैट रेंट पे दिया. अब मिस्टर एक्स ने वो फ्लैट रेंट पे दे रखा है वाई को, तो एक्स के लिए वो क्या होगी, सबलेटिंग. मेरे लिए वो क्या है, सबलेटिंग. मैंने लेट आउट किसको करा, एक्स को. एक्स ने किसको लेट आउट कर दिया, वाई को. तो मेरे लिए वो क्या है, सबलेटिंग. मैंने सब रेंट किसको दिया, एक्स को, और एक्स ने किसको दिया, वाई को. तो मेरे हैंड में जो इनकम होगी वो कहाँ की टैक्सेबल होगी, वो टैक्सेबल हो गया हाउस प्रॉपर्टी हेड में, क्योंकि मेरे लिए तो वो लेट आउट है. मैंने एक्स को दिया तो एक्स मेरे को जो भी रेंटल इनकम देगा, दैट रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ओके, और एक्स जो वाई से इनकम लेगा, जो रेंट की इनकम होगी एक्स को वाई से, जो रेंट रिसीव करेगा एक्स वाई से, वो होगी सबलेटिंग इनकम, एंड दैट सबलेटिंग इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड other sources. Okay, yes. Then any casual income that is not a formal income, that is casual income, that is not the part of your business, or that is not the part of your normal course of business, then that income will also be taxable under this. Means that casual income is the income which is not regular income, and which is not the part of normal course of business. Okay, which is not related from normal course of business, that casual income will also be taxable under this head. Okay, the next is insurance commission. If you receive any insurance commission, then that insurance commission will also be taxable under this. Okay, the next is family pension. If you receive some family pension, then that family pension will also be taxable under this. If you receive any interest on bank deposit, if you have fixed deposit, or if you have any time deposit, if you have saving account on which you receive interest income, so all these interest income on bank deposits, it may be public deposits and anything else. So if you receive any interest on bank deposits, then that interest will be taxable under this. So all these 12 incomes will be taxable under this head. Dividend, winning from lotteries, crossword puzzles, races, etc., interest on securities and compensation, income from letting out of machinery and plant, some received under Keyman insurance policy, gift received by individuals or any HUF, where former company purchase shares of closely held company, income from subletting, casual income, insurance income, family pension, interest on bank deposits. So all these incomes will be taxable under the head other sources. Okay. Yes. Now there is a term that is deemed dividend. Although I have already told you that dividend income will be taxable under the head other sources, but there is a term that is deemed dividend under section 222.
The full name of this term is deemed dividend under section 222E. Although dividend is taxable under the head income from other sources, but the deemed dividend which is calculated in the under section 222E, so deemed dividend under section 222E will not be taxable under this head. Okay, so although dividend is taxable under this head, but dividend under section 222E is not taxable. That means deemed dividend under section 222 is exempt from tax. So this dividend under section 222E will be exempt from tax and will not be taxable under any head. किसी भी हेड में डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E टैक्सेबल नहीं होगा। ऑल्दो जो नॉर्मल डिविडेंड है वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। So what do you understand by dividend under section 222E? So let's see. Deemed dividend, which is not actually dividend distributed by the company, but due to its nature, it is considered as dividend. So deemed dividend under section 222 is the dividend. Sorry, first we will talk about deemed dividend. So deemed dividend is which dividend which is not actually dividend, which is distributed by the company, but due to its nature, it is considered as dividend. तो एक्चुअल में वो डिविडेंड नहीं है, तो उसके नेचर की वजह से हमने उसको डिविडेंड अज्यूम कर लिया है। कुछ प्रोविजंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनकम टैक्स के, जो ऐसी इनकम्स को डिविडेंड अज्यूम कर लेंगे जो एक्चुअली डिविडेंड नहीं है। कंपनी ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कराया है वो वाला डिविडेंड नहीं है, लेकिन उसके नेचर की वजह से उसको डिविडेंड अज्यूम कर लिया जाता है। तो ऐसे डिविडेंड्स को हम बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड का मतलब होता है मान लिया जाना, एक्चुअली में वो डिविडेंड नहीं है, लेकिन हमने उसको डिविडेंड की वजह से, उसके नेचर की वजह से उसको डिविडेंड मान लिया। So that dividend will be known as deemed dividend. Okay. Now, which dividend falls under dividend under section 222E? See, following advances or loans will be considered as deemed dividend under section 220. So, following advances which we are going to study, these advances and loans will be considered as deemed dividend under section 222E and will not be taxable under any of the heads. This deemed dividend under section 222 will always be exempt from tax. No tax will be charged on deemed dividend 222E. Okay. So, which advances and loans will be considered as deemed dividend? Let's see. If any advances are loaned by a closely held company to an equity shareholders who hold not less than 10% voting rights, that is shareholders who have at least 10% voting rights, and any concern in which such shareholder having at least 20% voting right or 20% profit share. In these two cases, these two are known as deemed dividend and will be exempt from tax. So in दो conditions को हम मानेंगे कि ये deemed dividend है under section 220. So what does it mean? See, if any advances या loans by closely held company to, अगर कोई आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, आपसे रिलेटेड कंपनी है, आपकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो अगर एडवांस या लोन देती है किसको? एन इक्विटी शेयर होल्डर हु होल्ड नॉट लेस देन 10% वोटिंग राइट, दैट इज शेयर होल्डर हु हैव एटलीस्ट 10% वोटिंग। आप ऐसे शेयर होल्डर को एडवांस या लोन दे रहे हो जिसके पास एटलीस्ट 10% का वोटिंग राइट है। ओके, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को कोई एडवांस या लोन दे रहे हो, या ऐसे किसी कंसर्न को एडवांस या लोन दे रहे हो जिसमें उस शेयर होल्डर का 20% वोटिंग राइट है। कौन से शेयर होल्डर का? ऐसे शेयर होल्डर का जिसकी आपकी कंपनी में तो 10% वोटिंग राइट है, एटलीस्ट 10% वोटिंग राइट है। इट मे बी 12%, 15%, बट एटलीस्ट 10% वोटिंग राइट शुड बी देयर। तो ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जिसके आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी में या आपकी कंपनी में 10% का वोटिंग राइट है, और आप एडवांस दे रहे हो ऐसे किसी कंसर्न को जिस कंसर्न में उस इक्विटी शेयर होल्डर का, जिसका आपकी कंपनी में 10% वोटिंग है, उस इक्विटी शेयर होल्डर का उस कंपनी में, जिस कंपनी को आप लोन दे रहे हो, उस कंपनी में 20% का वोटिंग राइट है या 20% का, एटलीस्ट 20% का प्रॉफिट शेयर है। ओके, so if you provide any advances or loan to these two conditions or these two person or individuals or company, then in that case the income will be known as these advances known as deemed dividend and will be exempt from tax. Okay, so these advances and loans will be known as deemed dividend under section 222E and will be exempt from tax. So in loans and advances पे आप इस लोन एंड एडवांसेस पे कोई भी इनकम अगर आप रिसीव करते हैं तो उसको डीम्ड डिविडेंड की इनकम माना जाएगा और वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो इनकम क्या होगी आपकी
exempt हो गए. Okay, so under deemed dividend आपको याद रखना है, this is very important point of exam point of view. So deemed dividend under section 222E कभी भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. That you have to remember that on deemed dividend no taxable will be charged. Deemed dividend under section 220 will always be exempt. Okay. So deemed dividend under section 222 होगा क्या? ऐसे advances या loan which is provided by your closely held company to whom? To an equity shareholder who held at least 10% voting right in your company, or provide an advance or loan to any concern in which that equity shareholder which have 10% voting right in your company have 20% voting right in that concern to which you are providing advances or loan. Okay, 20% voting right, or you can say 20% of profit share. Okay, so this is all about the dividend under section 222. So these two are known as deemed dividend under section 222 and will be exempt from tax. Okay, now this is all about the incomes which will be taxable under this head. Now let's talk about expenses. So for which expenses you have provided deduction? So deductions for expenses. कोई भी इनकम आपने पढ़ी जिसकी हेड में आपने इनकम टैक्सेबल करी, चाहे वो सैलरी हेड हो चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, आपकी इनकम तो टैक्सेबल होगी, लेकिन उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस करे उनका आपको डिडक्शन मिलेगा. मतलब आपकी इनकम में से वो एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो आपकी इनकम होगी, उसके ऊपर टैक्सेस चार्ज. तो इस हेड में कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनका आपको डिडक्शन मिलेगा? So let's see deduction for expenses section 57. So see there is some incomes and deduction, and now quantum of deduction is also there. So first income is interest and dividend. If you receive any interest or dividend income, then that interest and dividend income will be taxable under this head. Now if you do any expenditure on this, in the case on the on get the interest or dividend, और interest और dividend को earn करने के लिए, basically इनको earn करने के लिए आपने कोई expenses करे हैं, तो उन expenses का आपको deduction मिलेगा. Okay, so see interest paid on money borrowed for such investment and commission and nomination or other expenses incurred to collect such income. तो interest की income को collect करने के लिए और dividend की income को collect करने के लिए अगर आपने कोई expenses करे हैं तो उन सारे expenses को आपको deduction मिलेगा. That means उस इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम में से वो एक्सपेंसेस का अमाउंट आपका लेस कर दिया जाएगा जो भी कॉस्ट आपने इनकर करी. तो व्हिच एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेबल? तो सी इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर सच इन्वेस्टमेंट. इफ यू रिसीव इंटरेस्ट ऑन अ लोन एंड टू प्रोवाइड दैट लोन फॉर दैट पर्सन, you to provide that loan you also take a loan or you also take money from some other person. आपको आपने जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. नाउ आपको जिस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सपोज आपको किसी लोन पे इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, वो टैक्सेबल होगा अंडर दिस हेड. और उस वो लोन के पैसे आपके पास आए कहाँ से? आपने भी किसी और के पास लोन लिया था, तो किसी और के पास आपने लोन लिया था तो आपको किसी और को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो अगर आपने ये लोन देने के लिए कहीं से पैसा लिया है और उस पैसे पे कोई एक्सपेंसेस आपको करना पड़ रहा है तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा. ओके, सपोज लेट्स हैव एन एग्जांपल. मैंने मिस्टर एक्स को एक लोन प्रोवाइड किया. मैंने मिस्टर एक्स को लोन दे रखा है 10 लाख रुपीज का. अब उसमें से 6 लाख रुपीज तो मेरे पास पड़े थे. 4 लाख रुपीज मैंने क्या किया, मैंने बैंक से 4 लाख रुपीज का लोन लिया और टोटल 10 लाख करके मैंने किसको दिया, मैंने मिस्टर एक्स को लोन दे दिया. उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है सपोज 1 लाख फॉर 1 ईयर. 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट की इनकम हो रही है. ओके, नाउ उसमें से मैं बोलूंगी कि ठीक है मेरे को 1 लाख इनकम हो रही है तो आप 1 लाख पे टैक्स लगाइए, लेकिन 4 लाख रुपीज तो मैंने बैंक से लिए था, उस बैंक से मैंने जो लोन लिया है उसके ऊपर मेरे को भी इंटरेस्ट कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इनसे, कि मेरे को वहाँ पे 20,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ओके 1 लाख रुपीज जो आपके इंटरेस्ट इनकम है उसमें से हम डिडक्शन देते हैं 20,000 रुपीज. दैट इज योर कॉस्ट और योर एक्सपेंसेस. 20,000 is also your expenses to maintain this loan or to provide this loan. You have expended 20,000 rupees at interest to bank. Okay, so your remaining income will be taxable. That will be 80,000. Okay, that's clear. And if you spend some amount on commission or remuneration or other expenses to incur to or collect such income, suppose you are not able to collect that income.
सपोज कोई मिस्टर एक्स है जो आपको इंटरेस्ट की इनकम नहीं दे रहा है और आपका लोन का अमाउंट भी वापस रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपने क्या किया, एक पर्सन अपॉइंट करा, एक पर्सन ऐसा अपॉइंट करा जिसकी बहुत चलती है, ओके, जो मार्केट में डील करता है, उसकी बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है, और वो कैसे भी वो कहता है कि मैं आपके इंटरेस्ट का पैसा निकाल के दूंगा आपको मिस्टर है ए इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो मैं आपको इंटरेस्ट का पैसा उससे लेकर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको उस पर्सन को कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कुछ रेम्युनरेशन देना पड़ेगा, सिर्फ उस कमीशन की बेस पे वो पर्सन काम करेगा। तो इफ यू पेड सम कमीशन और रेम्युनरेशन और अदर एक्सपेंसेस to collect such income, then that expenses will also be deducted from your income. तो अब मिस्टर एक्स के पास कितना पैसा आ रहा है, 1,00,000 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है, और आपने एक पर्सन जो इंटरेस्ट का पैसा आपको निकलवा के दे रहा है उसको आप रेम्युनरेशन देते हो, अगर वो एक 10% का रेम्युनरेशन देते हो, दैट मीन्स 1,00,000 पे 10%, 10,000 का कमीशन उसको देते हो, तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी, 1,00,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होगी, लेकिन इस इनकम की इंटरेस्ट की इनकम को रिसीव करने के लिए आपने एक पर्सन अपॉइंट किया और उस पर्सन को कितना पैसा दे रहे हैं, 10% का कमीशन दे रहा है, दैट मीन्स 10,000 रुपीज दे रहे हैं, तो आपके 10,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 10,000 आपने जो एक्सपेंस किया उसका डिडक्शन मिल जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी 90,000 विल बी टैक्सेबल इन योर हेड, ओके, ये। Then next is family pension. So 33% of family pension, maximum up to 15,000 will be exempt. So if you have received any family pension, then 33% of that family pension will be exempt, and the exemption limit will be maximum up to 15,000. Okay. Yes. The next is income from letting out. So, see, first of all, let's have an example of family pension. If you receive any family pension for rupees 1,00,000, if you receive family pension as rupees 1,00,000, then 33% of which is 33% of 1,00,000 is 33,000. Okay, so your exemption is 33,000, but the maximum limit is 15,000. So you will allow the pension amount, deduction of pension is rupees 15,000. Okay, let's have another example. If you receive family pension is 10,000. Okay, 10,000 rupees you receive as pension. Now 33% of that is 3,300. That means 3,300. In that case, exemption will be provided to you is 3,300 because maximum limit is 15,000. If you receive less than 15,000 or your exemption limit is, you calculate 30% of your pension amount and that amount is less than 15,000, then that amount will be given to you as exemption. But the amount is greater than 15,000, then in that case 15,000 maximum amount of deduction will be given to you. तो अगर आपने जो कैलकुलेशन करी हो 15,000 से कम है तो जो कैलकुलेशन में जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आया वो वाले अमाउंट का आपको exemption मिलेगा, और अगर 15,000 से ज्यादा कैलकुलेट होकर आया तो मैक्सिमम 15,000 मतलब 15,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। अगर आपने 33% फैमिली पेंशन का कैलकुलेट किया और आपका रिजल्ट आया 20,000 तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 15,000। अगर आपने कैलकुलेशन करी फैमिली पेंशन की 33% की और आपका रिजल्ट आया 10,000 तो डिडक्शन कितने का मिलेगा 10,000। ओके, तो मैक्सिमम 15,000 होगा, कम जितना भी होगा उतने कम का ही आपको डिडक्शन मिलेगा, बट मैक्सिमम अमाउंट इज 15,000 ऑफ डिडक्शन और एग्जेम्पशन। ओके, यस, नाउ यू सी income from letting. If you are subletting any house property, then the letting out of any property, any assets, or subletting of house property, the income received from letting out or subletting, that means rental income. From rental income, these expenses will be exempted or deduction of these expenses will be provided. So reduction of repair, insurance and depreciation will be provided too. So see, if you are letting out your machinery, if you are giving your machinery on rent and you receive 15,000 from letting out that machinery, okay, the rental income that you receive from machinery is 50,000. Now you have some expenses for the repair and maintenance of that machinery in the year. So in the year you spend on repair and maintenance of that particular machinery is 10,000. Now उस repair and maintenance के लिए 10,000 rupees आपने spend किया है, that will be deductible from income of rent. So your rent income is 50,000. Now 10,000 of repair expenses will be deducted. So 40,000 will be taxable in your. So आपने जो लेट आउट किया है उसके ऊपर एसेट्स के ऊपर कोई रिपेयर का एक्सपेंस है, कोई इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, कोई डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, देन these expenses will be allowed as deduction to. Okay,
other expenses incurred or wholly or exclusively for earning such income. If you have expend some income, spend some expenses or incurred some expenses wholly or exclusively for earning of such income, then in that case, that expenses will also be allowed as deduction for the purpose of calculation of income. Okay, तो अगर और भी कोई एक्सपेंसेस आप ऐसी इनकम्स को अर्न करने के लिए होली और एक्सक्लूसिवली इन्हीं इनकम को अर्न करने के लिए अगर आप कोई एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस भी आपकी इनकम में से लेस. Okay, so these are the little introduction of income and expenditures of income from other sources. Now that's it for today's lecture. In next lecture we will discuss some more provision from income from